morning, students. I hope you all are doing great at your places, and today we'll be starting with the story completion. So let's just begin. Title of our chapter is story completion, right? We all love listening to and of course reading stories. हम लोग को सुनना और पढ़ना स्टोरीज को बहुत पसंद है. स्टोरी राइटिंग एक आर्ट है, ये क्या है, एक कला है. However, just as any other राइटिंग टास्क नीड प्रैक्टिस. जिस तरीके से बहुत सारे राइटिंग स्किल्स को और प्रैक्टिस चाहिए होती है, प्लानिंग चाहिए होती है, एंड वी नीड टू यूज दी स्पेसिफिक स्किल्स. स्टोरी राइटिंग को भी स्पेशल स्किल्स चाहिए होती है. स्टोरी राइटिंग टू नीड्स स्पेशल स्किल्स, राइट. गुड स्टोरी शुड बी अरेंज इन द फॉलोइंग स्टोरी इन द फॉलोइंग वेज. में स्टोरी को कैसे अरेंज होना चाहिए, दैट इज द मेन पॉइंट्स जो हैं और जो इवेंट्स हैं, दे मस्ट फॉलो अ क्लियर ऑर्डर. एक क्लियर ऑर्डर होना चाहिए. कैरेक्टर्स दे शुड अपीयर रियलिस्टिक, बिल्कुल रियल होने चाहिए. A story can be made interesting by incorporating dialogues. अच्छे we used to use fancy dialogues, and a piece of conversation है वो एक, it should be in a natural way, it should not be artificial, right? Conclusion of the story should be engaging, बहुत ही ज़्यादा interesting होनी चाहिए. Your story should convey a meaningful message to all the readers. सारे readers को, हम लोगों को एक meaningful message दे आपकी स्टोरी. नाउ फ्यू पिक्चर्स दे आर गिवन विद सम हिंट्स बिलो. उसमें कुछ हिंट्स दिए हुए हैं. यू जस्ट हैव टू लुक एट द पिक्चर्स with the help of those hints, and you have to write the story in the, of course, the past tense, because everything in the story writing is written in past tense, and one has been solved. It is given has been example. It is given you as an example for your help, right? Now first is the foolish scholars, right? So there is a hint over here that in North India there live 4 friends. 4 friends रहते हैं. They are well educated and knowledgeable. They are very knowledgeable. They saw the lion bones. Lion की bones को उन्होंने देखा. First assemble the bones. उन्होंने bone को assemble किया. Second, they put the skin, flesh, and of course the blood. And third, they brought the lion back to light. वापस से उसको लेकर आ गया. And the lion killed all of them. और lion ने सबको मार दिया. देखिए कैसे उन्होंने स्टोरी की है. That in North India there live 4 friends. They were well educated, बहुत ही ज़्यादा well educated और knowledgeable men थे. एक men की बात नहीं हो रही है, 4 बंदों की बात हो रही है. That is why men. And one day 4 friends, they were traveling by the thick forest. Thick means dense forest. में they were traveling on the way. उन्होंने lion की bones को देखा, and they decided to check their knowledge to give life to the dead lion. को वो क्या दे दें, उनको वापस से उसमें जान ला दे. The first जो है friend, they assemble the bones. उन्होंने bones को assemble किया. And second friend जो है, they put the skin, flesh and bones, blood to the bones को उस पे ये सब लगाया. And the third friend was about to bring the lion back to the life, कि वो वापस life में आ जाए. The fourth friend shouted not to bring the lion back to the life, but what did he do? He did not obey him. उन्होंने उनको obey नहीं किया, उनकी बात नहीं मानी, and provided the life, और उसको वापस उसके अंदर जान लेकर आ गया. And when the lion he just came into life, वो अपने वापस से जिंदा हुआ, he ate up all the friends, सबको खा गया. So moral क्या है, that a little knowledge is a very dangerous thing. बहुत ही छोटी, मतलब आप समझ लीजिए कम नॉलेज होना ही बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थिंग है, राइट. मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज, राइट. यू जस्ट हैव टू लुक एट द पिक्चर, यू हैव टू रीड द hints and write the stories which is given below. देखिए belling the cat, this is basically the hint is given over here that mice is it's go down, right. Dash worried, a cat had killed many, dash called a meeting, dash let's just tie a bell which is round the cat neck, dash accepted the proposal, and dash one old mouse, dash who will bell the cat, dash the cat came, dash and kill many. Then there is a blank, and others ran away. You have to frame the story on your own. Moving on to the next is a clear monkey. Again you have to read this hint and you have to frame a story on your own, right. So that was all about story writing. I hope you all understood. Please keep reading each day and stay blessed. Thank you.